Good morning, everyone. This is Hitesh Shangit from Spider Software, and I'm support executive from Mumbai. Today's topic is intraday trading strategy with pivot points. ओके सो ज़्यादा फोकस रहेगा कि हमें pivot points को किस तरीके से यूज़ करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में एंड उसके बेसिस पे हाउ वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक सो दैट विल सी टुडे ओके सो सबसे पहले जो पार्ट है वो है व्हाट इज pivot points ओके सो pivot points is a price level that is used by trader as a possible indicator of a market movement. So एक वो level है where we can see whether the stock is in a bullish mode or in a bearish mode. So that will indicate the trend of a stock. So pivot जो name है okay वो point है it's an average of previous trading days high low and close calculation. So overall अगर हम देखें तो pivot points different pivot points होते हैं वो सारे calculations होते हैं of a price terms. Okay, so it is a average of previous days high low and close. Okay, so now we can see the bullish sentiment we can consider as when price is above the pivot point. Okay, so जो भी levels pivot point के ऊपर होंगे that will consider as a bullish sentiment or we can say as a bullish trend stocks. Okay, और जो stocks pivot points के नीचे होंगे उसको consider करेगा as a bearish trend और a bearish sentiment जहां से आपको स्टॉक का डायरेक्शन पता चलेगा. Okay, so the next part है कि in pivot points resistance are the upper levels which defined as a supply point. So, जब आप pivot points देखते हो सॉफ्टवेयर में तो आपको ऊपर के लेवल्स मिलेंगे नीचे के लेवल्स मिलेंगे. सो ऊपर के लेवल्स को हम कंसिडर करते हैं एज अ रेजिस्टेंस. ओके एंड वहाँ पे मेजरली डिफाइन वही करता है कि जो स्टॉक्स विल बी एट अ सप्लाई पॉइंट एंड इन pivot points supports are the lower levels which defined as a demand point. ओके सो ये जो चीजें हैं ये हम पहले सॉफ्टवेयर में देखते हैं हाउ वी कैन एनेबल द सेटिंग्स. ओके सो स्पाइडर सॉफ्टवेयर में आ गए. अगर आपको यहाँ पर चेक करना है सो यू हैव टू गो टू सेटिंग्स, चार्ट सेटिंग्स एंड यहाँ पे यू कैन सी अ pivot. ओके सो यू कैन सी pivots के जो है शो pivot lines, शो pivot points of previous day एंड शो pivot levels. सो यहाँ पे ये मैंने सारे एनेबल कर दिए हैं एंड यू कैन सी चार्ट पे मुझे लेवल्स दिख रहे हैं. ओके सो यू कैन सी द PV is the pivot. Okay, and this is R1 is the resistance 1, R2 is the resistance 2. Okay, same way अगर हमें यहाँ पे देखना है then you can see S1 is a support 1. So these are the pivot levels and to enable these pivot levels you have to press Control G on an intraday chart. Okay, you can enable this and you can disable this with the help of Control G. Okay, so now we can see this is the example of Bandhan Bank. You can see this is a pivot level where you can see PV is there and above this the stock is bullish, below this the stock is bearish. Okay, and you can see the stock reached to R1 and then it got a supply and it reached to again to PV, and again you can see the pivot reached to that S1 and S2 and again it bounced back to PV. So this shows that this is the demand point and R1 is the supply point. So now we have different pivot points. You can see classic is there, Cambrilla, Fibo 2, Raje and Spider 2, Woody's, Denmark, Denmark, Central and Gan square of 9. So these are the different types of pivot points. In our software, we have that options. When you click on settings, you can go to settings and you can go to pivot. Okay, you can, when you drop down this pivot type, you will get this different type of pivots. Okay, अभी यहाँ पे देखो आपको लिखा है classic 4. What this mean classic 4? 4 means it has 4 upper level and 4 lower level in that pivot. You have 4 resistance and we have 4 support. In the Cambrilla we have also the same Cambrilla 4, which means 4 resistance and 4 support. And you can see in this Raje, you will get 3 supports and 3 resistance. So this number defines how many levels that you have.
Okay, so these settings, and if you wanted to change in a chart, so you have to right click on the chart, and then you have to change settings, sorry, chart settings, and then you have to click on pivots, and from here if I choose central pivot, click, and then you can set. So you can see this is central one, which means only one level of resistance and one level of support. Okay, so again I'll go to chart settings. If I wanted to change to again to classic 4, and I set. Okay, so again it changed to the classic 4 pivot point. So today I'll focus on classic pivot points, which has 4 levels of resistance and 4 level of support. First question in your mind, that why I choose classic pivot points. The reason behind that, because these pivot points are easily available on a free platform. Okay, so everyone has the access of the classic pivot points. So there will be high chances that major crowd will follow these pivot points. So that's the reason that I choose the classic 4 pivot points in our software. Okay, and on that basis we'll discuss the further strategy on the pivot points, that how we can use it in our intraday trading day, and how we can earn a maximum profit with the help of this pivot point. Okay, so today's this query is all about the basis of the logic of previous day high low as well as the pivot points. So everyone knows that previous day's high, when we talk about previous day high, everyone knows that previous day high will be set as a resistance for every stocks. So if suppose, if at a resistance, if same time we'll get a stock which is also at a resistance, so there will be chances of dual resistance at the same level. Okay, so whether that stock crosses above that, then we'll consider as a yes, this stock has a potential to go above that level. Okay, so that we'll see today in this webinar. So this is the classic pivot point query which I already made, and the setup for this query is, you have 15 minutes time frame. We have to take a chart of candlestick chart, and the buying setup is price close above previous day high plus any one resistance cross. And for bearish setup, we have to choose price close below previous day low and plus any one support crossing level. That will see further. This is the buying trade setup rules. I'll show you. Okay, you can see the voltas. You can see a stock crosses at the same time above previous day high as well as the resistance one. Okay, so this kind of filtration that we'll get in the technical query, and this is what the logic is all about. When a single stock is crossing, when a single 15 minutes candle is crossing above previous day high and resistance one at the same time, then we'll get a alert. So the rules is 15 minutes candle price close above previous day high and also close above any one resistance in a single candle. Okay, that is see over here. This candle is crosses previous day high as well as resistance. Also, that signal candle is at day high. So suppose you can see this is not at day high, so we'll not consider this candle. That candle should be at day high, like Havels. You can see this is at day high. Okay, so this candle should be at day high. So this candle considered as a proper condition as per our rules, and stock will activate when signal candle highs break. Okay, so whenever candles high break, that signal candles high break will take an entry.
Like suppose you can see this is a resistance and this is a previous day high, and when this candles high break, then we can take an entry. Okay, so this kind of filtration that will take in the technical query, and you will get this kind of stocks, and on that basis we'll take a stop loss will be the lowest point of the 15 minutes candle, and target will be the nearest resistance. I'll show you example. Like this is a bullish example. You can see a stock crosses over here. Okay, and when this candles high break, we can take an entry. Okay, and will target will be the nearest resistance. Okay, and stop loss will be the lowest of the last two candles. Suppose if you can take this candle as well, and you can take the previous candle as well. It totally depend on us whether we have to take a risk reward ratio in 1:1 or 1:2 or 1:5. So totally depends on our risk reward. Okay, so we can take a stop loss of that candle as well or the previous candle. So this is the one example of a Cipla where it crosses the previous day high and resistance at a time, and when that candle's high break, it reaches to that resistance. So suppose 1:1 will be your first resistance, and suppose if you want to trail on, then you can go to next resistance, and you can take your stop loss at cost to cost. So this will be the first example. This is a Grasim stock. Okay, this is another example where you can see a stock crosses the same condition. Okay, and you can take an entry at this level. You can see that this is a candle's high, and when this candle's high break, will take a resistance as a target. So जहाँ पे भी अगर ऐसा हुआ कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, you will get a stock in technical query. हम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 मिनिमम ले सकते हैं, एंड देन जो नियर रेजिस्टेंस होगा वहां पर आप स्टॉक निकाल सकते हो. ओके, तो ये एग्जांपल है. एंड फॉर सेलिंग सेटअप, you can see 15 minutes candle close below previous day low, and also close below any one support. like यहाँ पे देखते हैं, you can see this is a Ramco cement. Okay, so आप यहाँ check करो, this candle crosses the both the level resistance as well as, sorry, this candle crosses support as well as the previous day low, and when this candle crosses, if this candle's low break, we can take a short entry with the stop loss of this candle high or this candle high. Any one candle's highest high we can take as a stop loss. So we have rules that 15 minutes candle cross both the levels. Also, that signal candle is at day low. Okay, that is required. Stock will activate when signal candle low is break. And stop loss will be the highest point of 15 minutes candle, and target will be the nearest support. So you can see the next example. This is ICICI Bank. Okay, so whenever a candle crosses the support as well as the previous day low at the same point in the same candle, and when that candle's low break, will take a entry. Okay, and target will be the nearest resistance. You can see this is S2. Suppose if I wanted to trail, I can take the next target will be S3 if I wanted to take more risk. Okay, so this is another example. This is bearish example ITC. Okay, you can see again the same condition form, and you can take a stop loss of this level. Entry will be the low of the signal candles, and you can take entry, and then you can take a target of the first resistance. So majorly when we use this strategy, it's totally basic, depends on the logic, because at the same time both support level, like the previous day's lows act as a support, and also the support one, which is a pivot level. So at the same time, if the both the level crosses, and if stock will try to come up again to crossing this both level at the same time, so it's quite difficult for a stock to
cover this level, okay, to come up again above this level. So these both level, whenever this crosses and if the stock move up again, so this will act as a resistance for that stock. So it's quite difficult to take a stop loss of your stocks. ठीक है, जब कभी हम ये स्टॉक्स अगर लेते हैं तो चांसेस कम होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। ओके, सो ये एग्जांपल्स है, ये कल के एग्जांपल्स है। ओके, रैमको, आरती है, बट ये आप यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक्शन पे रन किया है। जो यहाँ पे एक टेक्निकल क्वेरी जो मैंने रन की है यहाँ पर, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। जो प्रीवियस कल के दिन का पूरा एक्शन पे है, और यहाँ पे जो क्वेरी है जो मैंने रन की है वो मॉर्निंग 9:45 से रन की है। उसका रीजन है कि 9:30 को अगर आप स्टॉक्स देखते हो तो जो स्टॉक्स के जो कैंडल्स है वो काफी लंबे बनते हैं, तो वहां पर जो स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा हो जाता है और टारगेट कम हो जाते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता प्रॉपर। तो इसके लिए हमें ये ज्यादा से ज्यादा चेक करना चाहिए कि जो रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर फॉर्म हो रहा है क्या। इफ रिस्क रिवॉर्ड इज प्रॉपर फॉर्मिंग, देन ओनली वी हैव टू टेक अ ट्रेड। अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे कैंडल्स बड़े हैं वहां पे एंट्री नहीं लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज बड़े कैंडल्स को आप इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज उसका एक और फॉर्मेशन है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। लाइक सबसे पहला आया वोल्टास एट 9:45। ओके, यू कैन सी एज पर आर रूल्स दैट कैंडल शुड क्रॉसिंग बोथ द लेवल्स, तो यहाँ पे वो चीज हुई है, बट दिस विल नॉट टेक अ ट्रेड बिकॉज वो कैंडल जो है वो डे हाई पे नहीं है। यू कैन सी कि प्रीवियस कैंडल ने डे हाई है एंड करंट कैंडल इज इनसाइड द प्रीवियस कैंडल, सो वो डे हाई पे नहीं है, तो वो स्टॉक्स हम छोड़ देंगे। ओके, सो ये स्टॉक्स हम नहीं लेंगे ट्रेड के लिए। देन अगेन विल टेक हेवल्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये कैंडल है, ये कैंडल ने क्रॉस किया है R1 एज वेल एज प्रीवियस हाई, सो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि उसने वो कैंडल डे हाई पे होनी चाहिए, एंड यू कैन सी दिस कैंडल इज एट डे हाई, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई। बट द थर्ड कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो स्टॉक जो है, जो कैंडल है स्टॉक का, वो काफी बड़ा है। ओके, अब ये चीज काफी बड़ा, ये हमें पता है, बट एट द एंड अगर आप चेक करो, अगर जो स्टॉक ने ऑलरेडी नियरेस्ट पिवट को टच कर दिया है, दिस इज R2, सो अगर इस पे अगर ट्रेड लेने जाए तो ये रिस्की ट्रेड होगा, बिकॉज देयर विल बी लेस चांसेस दैट इट विल मूव टू R3। ओके, सो जहां पे कैंडल्स बड़े होंगे और आपको दिख रहा है कि वहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है, लेकिन वहां पे रिस्क अगर उससे भी ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा R3, एंड वो डिफरेंस है 11 रुपीज का। ओके, बट इफ यू विल टेक एंट्री एट 12:51 और आपका स्टॉप लॉस का अगर 12:33, तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे आपका ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। ओके, सो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप पहले ये चेक कर लीजिए रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अब कैंडल का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ स्टडी नेम है स्प्रेड। ओके, आप राइट क्लिक करोगे, ऐड स्टडी करोगे, देन यहाँ पर आप फॉर्मूलाज में F प्रेस करोगे, ये है स्प्रेड। ओके, so this spread will help you to find out the difference of a particular candle's high and low. So आप यहाँ पे जब आप इसको यूज करोगे स्प्रेड को, we have to take the display as a histogram, so आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, और you can take as a line as well। एंड यहाँ पे इनपुट में we have two options कि हमें कैलकुलेट कौन से बेसिस पे करना है। ओके, so we can use a price high and price low। ओके, वो ऑलरेडी देखो मैंने नीचे यहाँ पे ऐड कर ही दिया है यहाँ पर। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे मैं अगर मैं क्लिक करता हूँ एट बॉटम में, यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट साइड में अगर आप चेक करो, यहाँ पे राइट साइड में इसका DI दिखा रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स 19.45 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, सो 20 ऑलमोस्ट 19 to 20 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, एंड मेरे को टारगेट दिख रहा है 10 पॉइंट्स का। सो ये मेरे मेरे फेवर में नहीं है, सो आई विल इग्नोर दिस ट्रेड। ओके, सो ये स्प्रेड आपको हेल्प करेगा स्टॉक्स का, कैंडल का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। Okay, now अभी आया R3 Industries. Okay, you can see this candle crosses both the levels.
ओके, अब देखो ये कैंडल डे हाई पे भी है, बट इसने देखो पीवट को टच नहीं किया, सॉरी रेजिस्टेंस को टच नहीं किया R2 को, जब ये बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ था। ओके, सो अगर इसमें ट्रेड करना है, सो मुझे खाली ये वेट करना है कि ये जब कैंडल जो है इसका 50% जब रिट्रेस होगा, आई हैव टू टेक अ एंट्री एट दैट लेवल। देखो इस स्टॉक करने पहले इसका हाई ब्रेक किया, बिकॉज वो टाइम तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, रीजन बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा था, रिस्क ज्यादा था, रिवॉर्ड कम था। सो जैसे उसने हाई ब्रेक किया एंड देन स्टॉक मूव टू this level. So at that time, what I have to do, I have to take resistance and I have to press R for Fibonacci retracement. और यहाँ पे जो लेवल है आपको 50 कर लेना है, and then you can take that candles 50% retracement, and at that level you can take an entry, okay, and you can take this low as a stop loss. So क्या है कि आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है फिर ज्यादा हो जाएगा, लाइक व्हेन यू रिट्रेस दिस 50%, आपका देखो आपका रिस्क इतना था, okay, you can see this is a 20 rupees candle, okay, 20 rupees 80 पैसा, but if I take a 50% retracement, so कैंडल का जो पॉइंट है रिस्क है वो मेरे 10 रुपीज 40 पैसा हो गया। ओके, एंड अगर आप देखो यहाँ पे अगर 946 पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ, ओके, आई विल हैव अ टारगेट ऑफ 962। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं चेक करने जाऊँ तो मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर बड़ी कैंडल्स है, अगर उसने पीवट लेवल को टच नहीं किया है, जो भी नियर रेजिस्टेंस लेवल है उसको टच नहीं किया है, तो आपको वहां पर you have to take a retracement of that long candle, and you have to take an entry at 50% of the retracement of the long candle, and then you can take a stop loss of the lowest point of that long candle, and then you can target will be your nearest resistance. Okay, so ये आपका आरती एग्जांपल है, कल का ही एग्जांपल है। ओके, दिस इज रैमको, यू कैन सी। अब रैमको का रिजल्ट यू कैन सी एट 10:45 को रिजल्ट आया हुआ है ये कैंडल पे। ओके, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस कि इसका जैसे अगर आप चेक करो, इसका लो ब्रेक हुआ है, एंड देन यू कैन टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल और मे बी दिस कैंडल, टोटली डिपेंड ऑन अस ऑन विच कैंडल वी हैव टू टेक अ स्टॉप लॉस। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रीवियस डे का दिस कैन, अगर स्टॉक अगर ऊपर आता भी है, सो दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, सो आई ट्राई टू टेक दिस एज अ स्टॉप लॉस। ओके, तो अगर यहाँ से वो स्टॉक गया हुआ है, यू कैन सी द डिफरेंस इज 6.95, एंड इफ आई टेक दिस एज अ रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, ओके, सो दिस act as a 1967, and this low is 1958, so almost 9 to 10 rupees। तो अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता भी हूँ, तो आई विल टेक दिस सपोर्ट टू एज अ टारगेट, और मैं यहाँ पे कहीं पे एग्जिट हो जाऊंगा। ओके, सो ये कल का एक एग्जांपल है रैमको सीमेंट विच वाज सक्सेसफुल। देन एसएससी, ओके, यू कैन सी दिस कैंडल, जो कैंडल है यहाँ पे रिजल्ट आया, बिकॉज यू कैन सी एसएससी का जो रिजल्ट टाइमिंग है वो 11 o'clock का है। ओके, सो दिस इज कैंडल एट 11 o'clock, एंड व्हेन दिस कैंडल स्लो ब्रेक, यू कैन सी यहाँ पे जब ब्रेक हुआ है, यू कैन टेक अ target of this S2, and then you can take a stop loss of maybe this candle, or you can take a stop loss of this candle, because ये एक्टिवेट होने के बाद वो लेवल आया ही नहीं है। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर सपोज दिस बोथ लेवल क्रॉसेस, एंड अगेन इफ स्टॉक वांटेड टू क्रॉस दिस, so this both level will act as a resistance for that particular stock, so it's quite difficult to close above the both levels. So it totally based on the logic, this theory, and this theories showed here result successful, and if someone wanted to trail, so they also get S3. Again, this is Adani Ports, the next example. You can see this candle is too long, okay, is also a day high, but this candle doesn't touch the R2, so I retraces this candle, लेकिन stock वहां नहीं आया। Okay, so we don't take the trade at this that level, because वहां से वो ऊपर भी आ सकता है, या फिर वो वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। So we'll don't take such kind of trade जहां पर बड़ी कैंडल्स हो, लॉन्ग कैंडल्स हो, रिस्क रिवॉर्ड कम हो। ओके, देन दिस इज अदानी पोर्ट्स। देन नेक्स्ट है HDFC। ओके, यू कैन सी द HDFC आया हमें 11:30 को। ओके, द सेम कंडीशन सेटिस्फाइड, सेम कंडीशन का जब लो ब्रेक हुआ, ओके, वहां से स्टॉक नीचे गया।
ओके, आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है कैंडल का वो काफी कम है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स के आसपास है। ओके, एंड इफ यू टेक दिस एज अ स्टॉप लॉस, ओके, दिस कैंडल एज अ स्टॉप लॉस, सो वो 10 से 15 पॉइंट्स का हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रॉपर क्लियरली कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ देन आई गेट अ टारगेट टिल 26-22। सो आपको यहाँ पे रिस्क 10 to 15 रुपीज का है, बट आपको रिवॉर्ड यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 20 रुपीज से ज्यादा का मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। सो जैसे स्टॉक यहाँ पे आया बट इसने सपोर्ट 2 को टच नहीं किया है। ओके, सो अगेन स्टॉक अगेन वेंट टू अप, और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो उसने सेम वही चीज जो जहां से वो स्टॉक क्रॉस किया था उसको वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, एंड देन स्टॉक रीच एट लास्ट एट डे एंड कि वहां पे उसने S2 को टच किया है। सो ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करेगा डेफिनेटली, ये हमें हेल्प करेगा हमारे थियोरी में, एंड एट द एंड यू रीच आवर टारगेट। सो आउट ऑफ वी टेक 3 ट्रेड्स, ऑल 3 आर सक्सेसफुल, एंड देन उसके बाद अगर आप देखो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ पे भी उसने क्रॉस किया है बट कैंडल भी लॉन्ग है, एंड ऑल्सो इट्स नॉट सेटिस्फाई आवर डे लोज कंडीशन। ओके, बिकॉज ये यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है एट 115, एंड उससे पहले उसने डे लो बना चुका था, बट ये हमारा डे नहीं है, सो हम ये ट्रेड को नहीं लेंगे। ओके, देन मुथू फाइनेंस, बहुत बड़ा कैंडल है, इसको हमें लेना ही नहीं चाहिए। एंड दिस इज नौकरी। तो देखो नौकरी में डे हाई नहीं है, सो वो भी कंडीशन नहीं है। सो हमने जो क्वेरी रन की, वी हैव रन दिस क्वेरी एट 9:45 एंड टिल 2 और मैक्स 2:15, इफ समवन वांटेड टू रन टिल 2:15, बिकॉज उसके बाद भी हमें टारगेट्स के लिए टाइम देना है स्टॉक को। सो फॉर दैट आई यूज दिस क्वेरी फ्रॉम 9:45 टिल 2 or 2:15, and then we have to give a time to stock to reach our targets, and after that we don't have to take a trade, because उसके बाद टाइम कम होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा हमारे लिए। ओके, सो ये है, एंड ऑल्सो इफ आई वांटेड टू शो यू वन मोर एग्जांपल इज भारती एयरटेल। अब देखो कल के दिन में ये ट्रेड है, ये डे का फर्स्ट कैंडल है। ओके, इफ समवन वांटेड टू टेक अ डे स्टार्ट, बिकॉज मेजरली 95% चांसेस वही होता है कि जो स्टॉक्स है, जो डे का फर्स्ट कैंडल वहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनते हैं। ओके, सो अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि हाँ कि उनमें से 95% चांसेस है कि बड़े कैंडल्स ही बनेंगे, अगर जिनको रिस्क लेना है दे कैन ट्रेड, बिकॉज देखो ये जो कैंडल है इसने क्रॉस दोनों लेवल किया है, एंड उसने वो रीच नहीं किया R2 को। ओके, ये R2 को रीच नहीं किया था। सो उसके बाद जब देखो स्टॉक रिट्रेस किया, एग्जैक्ट दैट पॉइंट स्टॉक रिट्रेस्ड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता 584.20, बिकॉज जो हमारा 50% रिट्रेसमेंट ऑफ कैंडल है वो 584.20 पे आया, एंड लो विल बी दी कैंडल्स लो। ओके, तो अगर आप देखो तो जो पीवट लेवल है 577.20, अगर मैं लेता हूँ स्टॉप लॉस के लिए, सो वहां से मुझे डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये जो कैंडल जो है ऑलमोस्ट 6 to 7 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और अगर मैं टारगेट देखूँ यहाँ से तो वो मुझे 9 रुपीज का दिख रहा है, बिकॉज इफ आई एंटर्ड एट 584 I'll have the target of R2 at 593.80, so almost वो 9 रुपीज का रिस्क रिवॉर्ड है। So same way you can take a trade on a first candle as well, but अगर बड़ा कैंडल हो तो it will increase your risk। So try आपको वही करना है कि मैक्सिमम टाइम कि आप 9:45 के बाद से ही ट्रेड ले, ताकि अच्छा होगा आपके लिए। Okay, so all these are examples of yesterday's, okay, these are yesterday's action replay example, and then you can see at your system as well। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि अगर आपको कोई लेवल के साथ में अगर आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्रीवियस हाई और लो लेवल्स पे अगर आपको मिलता है देन यू कैन यूज दैट। ओके, सो ये ओवरऑल आज का थियरी यही है कि अगर आप ट्रेड करोगे तो इससे आपको चांसेस है कि दिस विल improve योर स्टॉक सिलेक्शंस, and at the end if we improve our stock selection we also have this target as well as the stop loss at the same time। so हमें calculations काफी easy हो जाते हैं ट्रेड लेते टाइम, एंड आई ओनली रन ऑन F&O स्टॉक्स, बिकॉज हमें वहाँ पे एक अच्छी वोलेटिलिटी मिलती है स्टॉक्स के अंदर। सो आई रन ऑन F&O stocks and try to use in F&O only।
बिकॉज निफ्टी 500 निफ्टी 200 में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, काफ़ी स्टॉक्स के बीटा ज़्यादा होता है, तो चांसेस है कि वो ट्रेंड जो है काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स के मिलेंगे आपको। सो एफएनएस स्टॉक्स में आपको ज़्यादातर स्टॉक्स जो आप ट्रेड ले सकते हो, सो इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। यू कैन सी जस्टरडे ओनली कि वहाँ पे आउट ऑफ 4 स्टॉक्स में से अपने 3 स्टॉक्स में ट्रेड किए हैं और वहाँ पर उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक आरती का, रैमको का, एंड यू कैन सी एसीसी का भी आया है, एंड एचडीएफसी। आउट ऑफ 4 ऑल 4 आर रीच अ टारगेट, एंड आरती का है वो हमें रिट्रेसमेंट बेसिस के ऊपर मिला हुआ है। सो या, सो दिस इज all for today's webinar, and if you have any queries you can directly reach to our numbers or you can mail us. Okay, so ये queries के नंबर है, अगर आपको कुछ लगे कि कुछ query है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए and we'll solve your query. Thank you everyone for your webinar.